So again, a very warm welcome to everyone in our new class of D by Huckel theory of your strong electrolytes. So in this effect, in this theory actually, we have learned about what are postulates which are about D by on which D by Huckel theory is dependent. So there we have learned four postulates of on which your D by Huckel theory is based. So after these postulates, there are two effects which we want to learn out. So as we have seen yesterday, as we have seen in our previous class, that this on this Debye theory, on the basis of postulates, this theory can tell us information regarding the two effects. Regarding how many effects? Two effects. So before explaining anything, I am just loading one slide to explain you these two effects, from which very first one effect is relaxation effect, and the second one effect is a electrophoretic effect, and the second one effect is a electrophoretic effect, as we have discussed in our previous class. So whatever the relaxation effect is there and the next one is electrophoretic effect is there, that these two effects are basically dependent on to the nature of your solution, which are containing the two types of ions, right? So as every one of you, I'm expecting every one of you have completed very first one class of D by Huckel theory. If you have not covered or if you have not seen first class of D by Huckel theory, where I have told you each and everything about DH theory, and then after it's a postulates. So please go and see the recorded session if you haven't. And now again I'm continuing your this two effects. For that I'm sharing some one slide. Wait till then, I'm loading this slide. Is the slide is visible? Each slide is visible to everyone? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Wait a minute. I'm not able to see nothing. Now I can see. So to explain. So to explain relaxation effect. To explain which effect? Relaxation effect. As I told you, simply whatever our these first one relaxation effect is there. What is mean by relaxation? When you want to relax, पहिल्यांदा समजून घ्या वर्ड काय किंवा ह्या इफेक्ट मध्ये आपण काय शिकू शकतो ते. ओके, सो रिलॅक्सेशन इफेक्ट इज द इफेक्ट when you want to relax, means you want some time. Okay, as I told you, I'm going to take your test. Then what you guys are requesting me to simply to postpone exam, postpone exam. Why? Because you want some time to prepare your syllabus points, right? What do I mean by that? It means when you want to relax, I mean to say relax is different, but for the relaxation what you need time. You need what?
time. So, see, you may ask me, ma'am, why are you telling all these points to us? Yes, to explain relaxation effect. ऐसा ऐकलं ना, रिलैक्सेशन इफेक्ट ऐसा जब आप सुनते हो तब क्या होता है कि आपके माइंड में लगता है कि कुछ तो हाई फाई टर्म होगी या फिर कुछ तो अलग ही कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तो फिर आपके माइंड का एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ रिलैक्सेशन इफेक्ट में क्या होता है। तो इन रिलैक्सेशन इफेक्ट, इन दिस रिलैक्सेशन इफेक्ट you can simply have you can simply have this effect which is related with the time, which is related with what guys, टाइम। मतलब क्या, अब देखो जब कभी भी अब देखो जब कभी भी आपका ये रिलैक्सेशन इफेक्ट आपको पढ़ना है या फिर समझाना है या फिर थियरी में लिखना है या फिर मेंशन करना है, तब all the time, whenever, all the time, whenever, as I told you in my previous class, simply whatever relaxation effect is there we are having at the center. In previous class I have showed you at the center point negative charge, but here I have shown you simply a positive charge. No matter at center we are showing positive means cation or anion, simply the vice versa point will be at the surrounding। मीन्स व्हाट, अगर से सेंटर को निगेटिव आयन होगा तो उसके बाजू में कौन से आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन्स होंगे। बट अगर से सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके बाजू में कौन से चार्जेस होंगे, मतलब चार्जेस मतलब मुझे बोलना है कि कौन से आयन से वो सराउंड होगा, तो सिंपली वो होगा निगेटिवली चार्ज आयन से। और अगर से सेंटर में निगेटिव चार्ज होगा तो वो होगा सराउंड आपके पॉजिटिव चार्जेस से। यस और नो? yes so when you have your if when you have your these ions, at that time these ions are getting surrounded very in a symmetric manner। कैसे? symmetrically, these are arranging in a symmetric arrangement। Now you may ask me, ma'am, what is mean by symmetric arrangement, and is there any symmetric arrangement? So its answer is yes, its answer is yes। So what is mean by the symmetric and asymmetric? symmetric मतलब यहाँ पर जैसे आप लोगों को अच्छे से एक सर्कुलर पाथ में आपके अरेंज हुए वाले एट आयन्स दिख रहे हैं, negatively charged ions are symmetrically in a circular path they have arranged and towards your positively charged ions। and now if you are, and this can be called as the आयोनिक एटमॉस्फेयर, इसे हम क्या बोलते हैं? आयन का एटमॉस्फेयर को बोलते हैं आयोनिक एटमॉस्फेयर, विच इज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हियर गाइस, which is symmetric, which is कसं? symmetric। but where I was telling you in my previous session also, simply when you, and this is in the absence of electric field, this is in the absence of electric field, but when this is central but now here in symmetrical arrangement, whatever your central ion is there, the central ion is not experiencing any net force of attraction from the ionic atmosphere। मतलब उस पर कुछ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ होता है क्या सिमेट्रिक एनवायरनमेंट में? तो नहीं। बट आप जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जाओगे, व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट इज मींस ये अभी यही असेंबली अभी ऐसे यही असेंबली आप अगर से कनेक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता अगर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस सिमेट्रिक arrangement of ionic atmosphere in the presence of electric field, then your ions can set in the motion। मतलब क्या, आपके ions क्या होते हैं? मोशन में आ जाते हैं। मोशन में आ जाते हैं मतलब दे स्टार्ट्स टू मोशन। व्हाई दे आर स्टार्टिंग टू मोशन? बिकॉज ये, अब मुझे बोलो, जब कभी भी यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक प्लेट्स अप्लाई कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगी मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी भी आप अप्लाई करोगे, तब व्हेन यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव कौन से आयन्स ट्रैक्टवाइज? निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, यस और नो? एंड नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव सपोजिट attracts। This thing is very well known to you, but when
these ions are getting attracted. These means हे इथे जर पॉझिटिव्ह होता ना, आता हा पॉझिटिव्ह काय करणार इन द प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हा पॉझिटिव्ह आयन इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये तुम्ही प्लेस करताय, मग तो कुणाकडे अट्रॅक्ट होणार रे, पॉझिटिव्हली अट्रॅक्ट टुवर्ड्स ऑब्वियसली निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. ओके, तर मग निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे तो अट्रॅक्ट होणार, म्हणजे काय होणार, मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव विल टेंड टू द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस विच वी हैव शोन इन डायग्राम, देख रहे हो आप. और अब निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, ये जो कुछ भी सराउंडिंग में आपको निगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे निगेटिव कहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, ये सारे कोशिश करेंगे इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने का. समझ रहे हो सब लोग. तो अब ये सिमेट्रिक जो एनवायरनमेंट था वो डिस्ट्रॉय हुआ, यस और नो. सिमेट्रिक एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता है मतलब सिमेट्रिक अरेंजमेंट इज कन्वर्टेड इनटू asymmetric arrangement, and whenever this symmetric arrangement is getting destroyed, that we can show by this diagram, this we can show by this diagram. ऐसे जो अच्छे से सिमेट्रिकली एनवायरनमेंट में थे वो अब असिमेट्रिक एनवायरनमेंट में जाते हैं. और अब क्या होता है, ये जो कुछ भी आपके सेंटर के आपके आयन, सेंट्रल के कैटायंस होते हैं, वो सेंट्रल के कैटायंस क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये सेंट्रल के आपके कैटायंस जो कुछ भी होते हैं, ये वाले, तो वो आप उनको एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करता है, पीछे से रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करता है. कैसा फोर्स, उसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स. अब जब ये रिटार्डिंग फोर्स क्या करता है, आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम बट रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है मैम फोर्स तो होता होगा, आप बोल रहे हो तो. हाँ, वेट गाइस, वेट अ मिनट. हेलो, हेलो, am I audible guys? Yes. Hello. Yeah, there is someone at my home. That's why I muted. Just I'll wrap up the session. Wait a minute. And you guys have webinar also, right? So wait a minute. Where I was on retarding force. Okay. This ion, this means ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को रिटार्ड करता है फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या, रिटार्डिंग फोर्स इज द फोर्स, रिटार्डिंग force is the force where it is decreasing the speed of a cation. मतलब ये force, ओके ओके ओके, नो इश्यूज. आप सबने रजिस्टर किया है वेबिनार के लिए, आई नो वेरी वेल. आई एम एंडिंग द सेशन, आई एम जस्ट wrapping up this session. Just give me a minute, just give me a minute. Okay guys, so whatever this retarding force is there, ये retarding force क्या करता है, आपके कैटायन की जो कुछ भी स्पीड है उस स्पीड को वो थोड़ा सा रिलैक्स, स्पीड को वो कम करता है. एंड दिस इज वाई आपका जो सेंट्रल आयन है, वो सेंट्रल आयन आप, ये सेंट्रल आयन आप क्या कर सकते हो, असिमेट्रिक एनवायरनमेंट में वो जाता है, ये सेंट्रल आयन ओनली पॉजिटिव, ये सेंट्रल आयन वो असिमेट्रिक एनवायरनमेंट की तरफ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक रिलैक्सेशन इफेक्ट, असिमेट्रिक रिलैक्सेशन इफेक्ट, असिमेट्रिक रिलैक्सेशन इफेक्ट. Okay guys, here our this one session is over. You can join the your webinar. Wait a minute. And here our simply D by Huckle theory with its postulate and the relaxation effect is over. In our next session we will cover electrophoretic effect. Okay, wait, we will cover electrophoretic effect in next session.